Hello everyone. So, how are you? I hope we all are fine. Fine. So, let us begin our topic with the Chola Empire. This is the part of the class 7 history chapter 2nd, New King and Kingdoms. Fine. And this is the second part of the New King and Kingdoms. In our initial video, in our first video, we have saw that this empire was divided, the whole India was divided into the two parts, the first in the northern region and the second in the southern region. In the northern region we saw that the part was divided like in between the Pals, Rashtrakutas and Rashtrakutas and Chalukyas. Fine. But in the southern we have Cholas, the most powerful dynasty at that time. Fine. So let us learn something about the Chola Empire, why they were so powerful, why they were so well known that we are reading them in our books. Fine. So let us begin with it. This was the region where the Chola Empire located. Fine. You can find this blue portion in this map. This blue portion, this region is the main Chola Empire area where the Chola has direct influence. मीन्स जहाँ पे चोलास का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था, वो डायरेक्टली इस एरियाज को कंट्रोल करते थे. तो दिस वॉज द रीजन वेयर चोला हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस. एंड दिस पिंक रीजन, फाइन, दिस पिंक रीजन, दिस एरियाज, द चोला डोंट हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, बट यहाँ पे एक चोलाज ने किसी और को अपॉइंट कर रखा था उनके बिहाफ पे वहाँ पे काम करने के लिए. फाइन. बिहाफ पे काम करना मीन्स कि लाइक अब अगर एज अ टीचर मुझे कुछ वर्क मिला है, मैं मॉनिटर को अगर वो वर्क प्रोवाइड कर देता हूँ कि मॉनिटर आप मेरी तरफ से ये वर्क आप कंप्लीट कर लीजिए. फाइन. तो जब अगर मेरे वो क्या होगा कि मॉनिटर ने क्या किया कि मेरे बिहाफ पे उस वर्क को कंप्लीट किया. लाइक अगर एज एन केस कि अगर आपका क्लास टीचर अपसेंट है, अब क्लास टीचर अपसेंट है तो अटेंडेंस कौन लेगा? तो फाइन, एट दैट टाइम who will take the responsibility? The monitor will take that responsibility to act as a teacher to take the attendance, right? सेम वे चोलास डायरेक्टली वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो चोलास ने क्या करा, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ इलेक्ट करके रख दिया, सो दैट रिप्रेजेंटेटिव विल रूल ओवर दिस एरिया. एंड यू कैन फाइंड द किंगडम ऑफ द चोला. दिस पिंक रीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया. फाइन. इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया. ये आउटसाइड टेरिटरीज है. ये क्या है? ये आउटसाइड टेरिटरीज है. दिस रीजन इज इंडोनेशिया, मलेशिया एरिया. फाइन. What is this region? This is the Laos region, right? Laos is a country, Indonesia is a country. तो ये क्या है? ये सब आउटसाइड कंट्रीज है. ये आउटसाइड कंट्रीज में भी इन लोगों का कंट्रोल हुआ करता था. तो सच अ वास्ट एम्पायर दे हैव एट दैट टाइम. फाइन. सो लेट अस बिगिन विद आवर सम बेसिक नॉलेज अबाउट द चोलास. हाउ डिड द चोलास राइज टू द पावर? चोला की पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ी? कौन थे ये लोग? तो इतने ज़्यादा एकदम इन्फ्लुएंस हो गए और इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए. फाइन. तो लेट अस बिगिन विद आवर नॉलेज टू विद द मैप. द माइनर chiefly family known as Mauryaas held power in the Kaveri deltas. They were the subordinates of the Pallava king of Kanchipuram. The Vijayala, who belonged to the ancient chiefly family of the Chola from the Udayar, captured the delta of the Motiyari. In this middle of the 19th century, he built the town at the Tanjore and a temple of the goddess Nishum Busudhini there. Like थोड़े से वर्ड्स टिपिकल है, आई नो, थोड़े से वर्ड्स टिपिकल. आप जब भी सदर्न एम्पायर पढ़ेंगे ना, सदर्न एम्पायर्स के वर्ड्स बहुत टिपिकल होते हैं. लाइक उनके जो टेम्पल्स के नेम होते हैं, उनकी जो प्लेसेस के नेम होते हैं, थोड़े से टिपिकल होते हैं. बट हाँ, वंस यू मेमोराइज देम इट विल बिकम ईजी बिकॉज द सेम स्टोरी विल गो ऑन. लाइक वही किंग है, लाइक उनकी फाइट हुई, देन ये सब कुछ था, तो यही पूरा स्टोरी यहाँ पे चलने वाला है. बट द थिंग इज द प्लेसेस, द नेम ऑफ द प्लेसेस, द नेम ऑफ द टेम्पल्स, राइट, द नेम ऑफ द स्कल्पचर्स, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेमोराइज देम. आई बिलीव दैट एंड आई होप सो. दीज आर द थिंग्स, बट बी अश्योर्ड नथिंग इज डिफिकल्ट. वंस यू गेट थ्रू इट यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ दिस. फाइन. तो क्या हुआ था, एक माइनर चीफली फैमिली थी जिसका नाम था, द नेम इज मुतारियास.
राइट, मुतारिया। अब व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, कावेरी डेल्टा के ऊपर कैप्चर किया डायरेक्टली। इन्होंने अपनी पावर कहाँ पे रखी, कावेरी डेल्टा पे। अब कावेरी डेल्टा पे जब इन्होंने पावर करी तो देन और ये कौन थे, ये पल्लव्स के सबऑर्डिनेट्स थे, ये पल्लव्स के सबऑर्डिनेट्स थे। जैसे मैं किंग हूँ, अब मैं डायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, किस रीजन्स के अकॉर्डिंग अपने अपने मेंबर्स को इलेक्ट कर दिया कि यहाँ पे आप कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे आप कंट्रोल करेंगे, वहाँ पे आप कंट्रोल करेंगे, राइट। लाइक आई एम द प्रिंसिपल, सो मैंने क्या किया, मैंने सारी क्लासेस में टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस क्लास इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर, दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर। तो मैंने क्या किया, पूरे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे डिवाइड कर दी। तो सेम इज द किंग ऑल्सो डिवाइडेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सो दैट द मुतियार्स were the subordinates of the Pallav king of Kanchipuram. Fine. So one of the person from the Mutiyars, like the Vijayalas, जो इस क्लेम को रिप्रेजेंट करते थे, इन्होंने क्या करा, he captured the delta from the Mutiyars in the middle of the 19th century. इन्होंने मुतियार से ये डेल्टा कैप्चर कर लिया and they built and he built a town of Tanjuar and the temple of the goddess of the Nishumbini. इन्होंने ये एरिया को कैप्चर करा और यहाँ पे इन्होंने टेम्पल बिल्ड करा। लाइक यू कैन सी ओवर हियर, लेट मी शो यू द मैप, दिस इज द मैप। ओके, सो यू कैन फाइंड दिस कांचीपुरम, you can find this area, wait, this is the Kanchipuram, this is the area which was influenced by Pallav. This yellow area is the influence of the Pallavs in the initial stage. Fine. Then what happened, then slow on, and this is the Kaveri Delta. This river coming over here is the Kaveri Delta. So this river, so they captured over here finally in the initial stage. Fine. And who is the most powerful kingdom, who is the most powerful king of that time? That is the Rajaraj I. Rajaraj I was considered as the most powerful Chola ruler, become the king in the 1985 and expanded the control all over of this area. He also reorganized the administration of the empire. The Rajaraj son Rajendra I, Rajaraj's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and the countries of the Southeast Asia and developing a navy of the expeditions. You can find they also have a navy. उन्होंने के पास वाटर फोर्स भी था, राइट, वो नेवी भी मेंटेन करते थे। एंड सबसे पावरफुल किंग कौन था चोला एम्पायर का? राजाराज वन, उनके सन का नाम राजेंद्र वन। दे एक्सपेंडेड द कंट्रोल। इवन ये कहाँ की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, बट बाय लिविंग इन दिस एरिया दे ऑल्सो फॉट विथ फॉर दिस एरिया। दिस इज द गंगा वैली। सो राजेंद्र वन हैज एक्सपेंडेड एंड रेड टू द गंगा वैली। उन्होंने यहाँ पे भी जाके फाइट किए, इतना दूर। कैन यू इमेजिन? इन्होंने श्रीलंका के लिए भी फाइट किए। दे ऑल्सो कंटिन्यू टू एक्सपेंड देयर टू द साउथ ईस्ट एशिया एंड दे ऑल्सो डेवलप्ड एन आर्मी, सॉरी अ नेवी। सो दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ द चोला एम्पायर, राइट? यू कैन इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ द सदर्न रूलर्स, राइट? ये सदर्न रूलर्स कितने पावरफुल थे। इन्होंने फॉरेन में भी अपनी टेरिटरीज बनाई। दे एक्सपेंडेड देयर रीजन। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू लर्न अबाउट द चोला एम्पायर। मीन्स इन्होंने इतना वास्ट कंट्रोल कर रखा था। एट दिस टाइम ऑल्सो बिफोर द एक्सपेंशन ऑफ चोला, दिस होल एरिया वॉज डिवाइडेड बिटवीन द थ्री किंगडम्स। द फर्स्ट वन वॉज द पल्लव्स, द सेकेंड वन वॉज द पांड्यास एंड द चीरास। बट देन कम्स द चोला एंड चोला कॉन्कर्ड होल एरिया। उन्होंने पल्लव्स को भी हरा दिया, उन्होंने पांड्यास को भी हरा दिया और उन्होंने चीरास को भी हरा दिया। फाइन। देन द पल्लव्स, यू कैन फाइंड दिस पल्लव्स इन द पार्शली इन द कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एरिया। फाइन। द पांड्यास होली इन द तमिलनाडु एरिया एंड द चीरास इन द केरला एरिया। फाइन। सो दिस वॉज द रीजन। देन what was the next?
the splendid temples and the bronze sculptures. You can see this picture, right? This picture shows the beauty of the sculptures, the beauty of the ancient monuments at that time. कितना ब्यूटीफुली इसको कार्व आउट कर रखा, कितना ब्यूटीफुली इस इमेज को इस मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने बना रखा है. फाइन. तो इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, इतने क्रिएटिव पर्सन्स थे वो, उस टाइम पे भी इतना अच्छा उन्होंने डिज़ाइन बना रखा है. इवन दो हमको आज भी इतने अच्छे डिज़ाइंस नहीं मिलते हैं, बट उन्होंने उस टाइम पे इतने ब्यूटीफुल डिज़ाइंस क्रिएट किए थे. Then what was the next? The big temples of the Tanjore and the Gaikonda, Cholapuram, built the Rajaraj and the Rajendra, was the architectural and the sculpture marvels. You can find this. This was the temple which was created, which was made by the Rajaraj one and the Gaikonda. This temple. Even today, this temple exists, and this was made far away from today. Fine. In the 985 BC. Fine. Right now we are living in the 2020, and this was created 985. Means approximately we are living in the 2020, and this was created in 985. If we subtract it, we will get 5, then 3, then 10. So this was created 1035 years ago from now. 1035 years ago. तो आप सोच सकते हैं आज तक 1035 साल पहले इस टेम्पल को बनाया गया था. 1035 साल पहले. आज भी ये टेम्पल एग्जिस्ट करता है. कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है. फाइन. दैट इज़ वाई वी यूज टू लर्न अबाउट दिस एम्पायर, चोला एम्पायर, बिकॉज दिस वॉज द splendid empire at that time. The Chola temples often become the nuclei of the settlement. They grew around them, and they were the center of the craft and the production. The temples were also endowed with the land by the rulers as well as by the others. The produce of this land went to maintain all the specialists who work at the temple and very often live near it. The priests and the grassland makers, the chalkers, sweepers, musicians, dancers, etc. In the other words, the temples were not only the place of the worship, they were the hub of the economic, social and the cultural life as well. Among us, the crafts associated with the temples, the making of the bronze image was the most distinctive. The Chola bronze image was considered as the most and the finest work, while the most images were the deities. Somewhere the images were made to the devotees as well. This is the bronze. Fine. This is made of the bronze. Fine. And this was the most distinctive things they used to create at that time. बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें बनाते थे ये उस टाइम पे उस चीज़ से. और टेम्पल्स जो उस टाइम पे बनते थे वो वो हब का ही कहते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल लाइफ. मीन्स वहाँ पे सारी प्रैक्टिसेस होती थी. तो वहाँ पे कुछ लोगों की अर्निंग भी हो जाती थी, वहाँ पे सोशल प्रैक्टिसेस भी किए जाते थे और वहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस भी किए जाते थे. और टेम्पल्स वाज नॉट लाइक ओनली फॉर द वर्शिप. दे यूज्ड टू प्रमोट द सोशल, इकोनॉमिकल एंड द कल्चरल लाइफ ऑफ ऑल द रीजन्स, ऑफ ऑल द पर्सन्स. फाइन. दैट्स व्हाई इन द एंशिएंट टाइम्स द टेम्पल वी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द मोस्ट एंड द मोस्ट. Fine. Let us move ahead. You can find this. We have seen this temple. Fine. This was created 1035 years ago. You can find this image also. It is the image of the Nataraj. Right. This was also created at the Chola Empire at that time. Fine. That's why I am placing these pictures to get a clear idea in your mind. मैं pictures इसलिए attach कर रहा हूँ slide में ताकि आपकी mind में clear idea create हो कि ओके दिस वॉज द टेम्पल. ऐसे स्कल्पचर्स उस टाइम पे बनते थे. मीन्स आई बिलीव इन एंड दिस इज द साइंटिफिक प्रैक्टिस एंड दिस वॉज प्रूव्ड कि लाइक ऑडियो विजुअल प्रैक्टिस इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस. मीन्स आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बनता क्रिएट हो जा एट अ टाइम क्लियर पिक्चर अटेंड होता है. और वो ऐसा क्लिक होता है कि वो आफ्टर 5 years और 10 years जब भी आप मेमोराइज करेंगे आपको सडन ऑफ मेमोराइज हो जाएगा. दैट्स वाई मैं ये सारे पिक्चर्स इसके साथ अटैच कर रहा हूँ सो दैट आपको एकदम से क्लिक हो कि व्हाट आई एम एक्चुअली वांट टू एक्सप्लेन यू. फाइन. लेट्स मूव हेड. द एग्रीकल्चर एंड द इरिगेशन.
the agriculture and the irrigation. You can find this picture over here. This is the here is the Kaveri Delta. This is the Kaveri Delta. Fine. You can find over here. This is the Kaveri Delta. Sorry, I have highlighted two. This is the Kaveri Delta. Fine. And the other regions. So let us learn about it. The Kaveri branches off into the several small channels because the emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently and deposit a fertile soil on this bank. The water from the canals also provide the necessary moisture for the agriculture and particularly for the cultivation of the rice. So like you can find over here, let me show you the image by zooming it. Okay. You can find these branches, the small branches. These branches of the Kaveri Delta. Fine. So what these branches? River एक आ रही है ऊपर से. You can find this river only single. But ये क्या आ रही है आगे आके split हो जाती है. And this splitting of the rivers in geography we call it as a delta. And this delta gives you the fertile soil because when the rivers flows from the upstream to the down, it brings the fertile soil with it, and it get deposited on the deltic area. And when this deltic area get this fine refined soil, then that soil become the most beautiful or most effective for the agriculture. Fine. That's why these people used to cultivate the rice. And today also in the present date also, the Tamil Nadu is well known for the rice cultivation, right? Because of the Kaveri Delta. Fine. Though the agriculture had developed earlier in the other parts of the Tamil Nadu, it was only for the 5th and the 6th century that this area was opened up for the large scale cultivation. The forest has to be clear in the some region and had lived in the other region. In the deltic regions, the embankments has to be built to prevent the flooding, and the canals and had to be constructed to carry the water of the fields. In many areas, 2 crops were grown in a year, and in many areas it was the necessary to the water crops artificially. Variety of the methods were used for the irrigation. In the most area, the well were dug, and the other parts, the huge tanks were constructed to collect the rainwater. सो द एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर था वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी. जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम आती थी उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने डील कैसे किया? उन्होंने वेल्स डिग किए, उन्होंने ह्यूज टैंक्स बनाए टू कलेक्ट द रेन वाटर सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देयर इरीगेशन प्रैक्टिसेस. बहुत सी जगह पे 2 क्रॉप्स अ ईयर भी प्रोड्यूस होते थे इन मेनी एरियाज. मीन्स एक साल में 2 क्रॉप्स, लाइक वी हैव रबी एंड द खरीफ. Same practice they used to follow from the like 10,000 years ago. Fine. So you can see, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि why history is important. For this reasons, the history is important because practices we are following today, that practices we got from these peoples. They used to follow like 10,000, 5,000, 1,000 years ago. And today we are following those practices. That's why I used to like remind you, please like take an interest in this subject. It is a beautiful subject because you will learn much more in this subject, much more than the other subjects, because it is splendid. Fine. So we learned about the agriculture practices, how they used to they get the fertile soils from the Kaveri Delta. Right, they used to preserve water through the tanks and the wells. They used to produce the two types of crops in a particular year. Fine. So this was the thing. They also cleared the forest in some regions for the agriculture. Fine. So this was about the agriculture and the irrigation. Then the last, administration of the empire. How empire was administered means उस empire को run कैसे किया जाता था, because we saw the empire was too vast. So how we used to how can we run such a big empire, right? So let us learn about it. The settlements of the peasants known as the Ur. We have certain terms over here, right? You have to
memorize them or you have to like recall them very frequently. The settlements were of the peasants were known as Ur, become the prosperous with the spread of the irrigation agriculture. The group of the such village were large unit is called as Nadu. The village council and the Nadu had several administration function including the dispensing the justice and the collection tax. तो लाइक पीजेंट्स को क्या बोलते थे, वो जब पीजेंट्स थोड़े से सेटल हो जाते थे एक एरिया में तो उनको बोलते थे उर, राइट। उर से वो क्या हुआ कि इरिगेशन से उनका इतने प्रॉस्परस हो गए बहुत, क्योंकि लाइक आप बिजनेस कर, आप अगर इरिगेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं तो लाइक आप सेल करेंगे प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा आपके पास बहुत सारे वेल्थ कंसंट्रेट हो जाएगा, देन दैट विल हेल्प यू आउट। देन द ग्रुप ऑफ द सच विलेजेस वेर, अब ऐसे बहुत सारे विलेजेस को अपन मीन्स अगर ले लेंगे लाइक ये है एक और, ये एक और है, ये एक और है, ये एक और है, लाइक ये क्या है बहुत सारे सेटलमेंट्स है किसके, पीजेंट्स के। जब हम इन सबको एक साथ ले लेंगे लाइक तो ये क्या हो गया, एक विलेज के बहुत सारे सेटलमेंट्स को हमने ले लिया तो हम इनको क्या बोलेंगे अब नाडू। देन द विलेज काउंसिल एंड द नाडू हेल्ड द सर्वल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इंक्लूडिंग द डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड द कलेक्शन ऑफ टैक्स। देन वो क्या होगा कि लाइक जो विलेज का काउंसिल बना होता है या नाडूस जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक वो जस्टिस भी प्रोवाइड करते हैं और वो टैक्स कलेक्शन भी करते हैं। द रिच पीजेंट्स एंड द विलाल कास्ट एक्सरसाइज द कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। सो सबसे ज़्यादा कौन पावरफुल रहता था उस टाइम पे यहाँ पे, रिच पीपल, जिसको हम बोलते थे ऑफ द वेला कास्ट। वेला कास्ट के जो रिच पीजेंट्स होते थे उनके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती थी। पावर कौन देता था उनको, सेंट्रली चोला गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली वो पावर में दे देते थे। तो वो क्या करते थे, कुछ अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, लाइक अगर कहीं जस्टिस प्रोवाइड करना है तो वो मेन पार्ट उसमें प्ले करते थे, टैक्स कलेक्शन का वो थोड़ा सा ध्यान में रखते थे। तो दिस थिंग्स यूज्ड टू हैपन एट दैट टाइम। द चोला किंग gave some rich landlords the titles like, the Chola king gave some landlords the titles like Muvenda Velan. Muvenda Velan. What is this Muvenda Velan? A Velan or a peasant serving the three kings. Okay, and the Ariyars, the chief, etc. mark the respect and the interested with the important ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। तो चोला किंग ने क्या, जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लाइक लैंड होता था उनको एक टाइटल दिया, दैट वाज मूवेंडा वेलन। मूवेंडा वेलन उनको टाइटल मिला एंड दिस टाइटल वाज देन मीन्स दे यूज्ड टू हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट पावर्स, लाइक दे गेन सर्टेन इंपॉर्टेंट पावर्स फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द चोलास। वी हैव सीन द ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव द लैंड ग्रांटेड ऑफ और द Brahmadiya. As a result, the large numbers of the Brahmins emerged in a Kaveri Delta as in the other part of the southern India. Each Brahmadiya was located after by a assembly and the Sabha was prominent the Brahmins landholders. This assembly worked very effectively and their decisions were recorded in the details in the inscriptions. Often a stone wall of the temple. Associated for the traders known as the Nagarams also associated the performance of the administration function in the town. The inscription from the, this is important, the inscription from the Uttaraya rule in the Chinglapur district, Tamil Nadu provided the details of the way in which the Sabha inscripted. The Sabha has separate committee to look after the irrigation work and the grant the temples, etc. The name of those eligibles of the members of this committee were written on a small ticket of the palm leaves and kept in the northward pots, for which a young boy was asked to pick a ticket and one by one each committee. This is the administration of that time. So what is the administration of that time? Okay, so उन्होंने क्या किया, ओट्स से नाडूस के ऊपर थोड़ा सा पावर किसको दे दिया, वेलन कास्ट को। देन वेलन कास्ट में या फिर लैंड ऑनर्स में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा लैंड थी, हाई कंसंट्रेशन, जो रिच थे,
उनको मूवेंडलान उनको एक टाइटल दे दिया, फाइन। ब्राह्मण्स भी इस टाइम पे हुआ करते थे, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड होते थे फ्रॉम द साइड ऑफ द किंग्स और द रिच पीपल्स, राइट। देन दिस होल थिंग वॉज डिपेक्टेड इन द इंस्क्रिप्शंस। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से पता पड़ती है? इंस्क्रिप्शन से। और इंस्क्रिप्शंस और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं ये तो सब आप हमको पता है, फाइन। द लास्ट ईयर ऑल्सो वी read about the inscriptions, and this year also, like all the ancient things we are going to find in the inscriptions, or like little bit of the excavations of the ancient sites and everything. These inscriptions in the southern India were also written on the walls of the temples, right? So that is the thing. You can find this picture over here. This is the piece of the inscription. It is the piece of the inscription from the Uttaraya Merur, as I told in the last slide कि this is important. ये मैंने वहाँ का पिक्चर लिया है, उत्तराय मेरूर में जो इंस्क्रिप्शन है, वहाँ का एक फोटो है. So this is for your better knowledge you can find over here, fine. So this is the thing. So thank you everyone, thank you for being with us, watching us, fine. And I hope the concept of the Chula Empire is clear to you. Who are the Cholas? Fine. As we have seen in our last video, if you have not seen our last video, then please refer to our last video, in which we have discussed the tri-party struggle. Tri-party means three empires जो last means जो northern India में struggle कर रहे थे, जिस टाइम पे Cholas southern India में struggle कर रहे थे. Fine. You can find these both on my YouTube channel. So thank you. Have a nice day. Take care.